A 30-year-old man presents with complaints of episodic breathlessness, often following exertion. One to three episodes occur daily and are accompanied by wheezing. Every 2 to 3 days, he wakes up at night with breathlessness. The episode subsides on taking 2 puffs of inhaler prescribed by his family doctor, that is salbutamol 100 microgram per puff. So salbutamol is a short acting beta 2 agonist which is a bronchodilator, and the symptoms are suggestive of asthma like breathlessness and wheezing. Lately, the episodes have become more frequent and are limiting his activities to some extent. Spirometry revealed FEV1 to be 70% of predicted value at baseline and 88% after 2 puffs of salbutamol, that is 100 microgram per puff. He is diagnosed to be a case of moderate bronchial asthma. Is this patient receiving adequate treatment for his condition? No. Since it is moderate bronchial asthma, salbutamol is not sufficient. Or some other drugs need to be used. Yes, we need to use corticosteroids, and instead of short acting beta 2 agonist, we can use long acting beta 2 agonist. If so, what should be the first line treatment for this patient? So since it is moderate bronchial asthma, we should start with low dose corticosteroid and a long acting beta 2 agonist. Since this is a patient of moderate severity bronchial asthma with greater than 1 episodes per day, he must be put on a regular prophylactic anti-inflammatory drug therapy. So to prevent the episodes, we need to put it on anti-inflammatory drug therapy. His present treatment with short-acting beta 2 agonist, that is salbutamol inhalation, alone is not adequate for his condition. The first line treatment of this patient would be a low dose inhaled corticosteroid. And a long acting beta 2 agonist. So instead of short acting, we will be using a long acting beta 2 agonist. So the action of long acting beta 2 agonist is for 12 hours. So it has to be given twice daily. For example, he may be prescribed fluticasone 125 microgram and salmeterol 25 microgram per puff inhaler. 1 puff to be taken twice daily. So fluticasone, it is a inhaled corticosteroid, and we will start with low dose, that is 125 microgram of fluticasone, and salmeterol 25 microgram, and it has to be given twice daily. A medium dose of the inhaled corticosteroid, that is fluticasone 125 microgram per puff, 2 puff twice daily alone may also be tried if prolonged use of long acting beta 2 is to be avoided. तो either low dose inhaled corticosteroid प्लस अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमें बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ नहीं करना है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को मीडियम डोज में देंगे. ठीक है, या तो लो डोज में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, या फिर अगर हमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट नहीं देना है तो जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसका डोज बढ़ा देंगे. And the second question is, in case another drug is prescribed, should this patient continue to use salbutamol inhalation to relieve episodes of breathlessness when they occur? So yes, even if
अनदर मेडिसिन इज़ प्रेस्क्राइब्ड, अगर और एपिसोड्स हो रहे हैं ब्रेथलेसनेस के तो उनको कंट्रोल करने के लिए साल्ब्यूटामॉल यूज़ कर सकता है. So the patient should continue to use the short-acting beta-2 agonist salbutamol inhalation to abort or terminate each episode of asthma when it occurs, despite instituting prophylactic therapy. अगर ये जो prophylactic therapy of corticosteroid and long-acting beta-2 agonist के यूज़ करने के बाद भी अगर episodes of asthma हो रहे हैं तो फिर salbutamol यूज़ कर सकता है patient. Which alternative drugs can be used in this patient? So corticosteroids के लिए दूसरा कोई alternative नहीं है, बट जो बीटा-2 एगोनिस्ट था उसके जगह हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं. Since no other drug is as effective prophylactic as a corticosteroid, it should not be replaced in this case of medium severity bronchial asthma. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिप्लेस नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से अच्छा प्रोफाइलैक्सिस कोई और नहीं देगा. पर जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट है उनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, एग्जांपल मॉन्टीलुकास्ट. सो बीटा-2 एगोनिस्ट की जगह हम मॉन्टीलुकास्ट दे सकते हैं. मॉन्टीलुकास्ट 10 मिलीग्राम 1 टैबलेट डेली इन द इवनिंग. बट कुछ पेशेंट्स में इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा. एज अ थर्ड ऑप्शन सस्टेन्ड रिलीज थियोफाइलिन 400 मिलीग्राम टैबलेट ओडी में बी ट्राइड विथ डोज टाइट्रेशन ओवर टाइम एज एड ऑन ड्रग टू द लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ओके, सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर बीटा-2 एगोनिस्ट के जगह हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं या सस्टेन रिलीज ऑफ थियोफाइलिन यूज़ कर सकते हैं.